साथ जीवन बीमा आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। On FM Gold and on our app News on AIR. We look forward to you walking this journey with us twice a week, every week. मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic indices in negative. Sensex closes at 69,522. Nifty settles at 20,901. There's registration of around 3.15 crore enterprises since the inception of Udyam portal, says Minister for MSME. Merchandise sector surpasses services sector in exports, says Union Minister Ashwini Vaishnaw. घरेलू शेयर बाजार में आज मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 69,522 पर हुआ बंद। निफ्टी 20,901 दर्ज हुआ। MSME मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा, उद्यम पोर्टल गठन के बाद से इस पर 3 करोड़ 15 लाख से अधिक उद्यमों का पंजीकरण हुआ। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मर्केंडाइज सेक्टर ने निर्यात के मामले में सर्विसेज को पीछे छोड़ा। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के संकेतों पर निवेशकों ने आज मुनाफा वसूली की। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 132 अंक यानी 0.19% घटकर 69,522 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37 अंक यानी 0.17% घटकर 20,901 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर आज दिखा। BSE मिड कैप्स इंडेक्स में 0.66% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.28% ऊपर आकर बंद हुआ। The key domestic indices ended in red amid negative cues from the global share markets. The BSE Sensex lost 132 points or 0.19% to close at 69,522. The NSE Nifty fell 37 points or 0.17% to end at 20,901. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose by 0.66% and the small-cap index gained 0.28%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 12 companies appreciated while 18 companies declined. Power Grid climbed 2.43%, Ultra Cement rose 1.62% and Titan gained 1.1%.
On the other hand, Bharti Airtel fell 2.46%, Hindustan Unilever declined 1.8%, and Tata Steel lost 1.37%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors logged gains, while 6 witnessed losses. Utilities sector climbed 3.16%, power gained 2.67%, and services sector rose by 1.63%. On the other side, FMCG lost 0.85%, metal index fell 0.75%, and tech sector slipped 0.38%. The overall market breadth was positive as the shares of 2,144 companies appreciated while those of 1,619 declined. A total of 122 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 83 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 103.86 पर कारोबार कर रहा था। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बाजार में आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी पैक तो मामूली घाटे के साथ बंद हुए हैं, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों में लिवाली अच्छी खासी की गई। किन अर्थों में ले रहे कारोबार को? देखिए, जो सबसे पहले तो करेक्शन की अगर हम बात करें तो एक ये माइनर करेक्शन है, ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। और आज ऑप्शंस के एक्सपायरी डे भी था, जिस वजह से थोड़ा मार्केट में एक वॉलेटिलिटी का माहौल रहता है और कई बार मार्केट्स हाई करके फिर करेक्शन लेती हैं। तो कुल मिला के जो मूड है मार्केट का वो काफ़ी बुलिश मैं कहूँगा कि मार्केट्स बहुत हाई पे हैं और मार्केट्स के जो सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली। और जो छोटे मझोले कंपनीज में ख़ास करके जब हम देखते हैं कि जो बहुत लार्ज ब्लू चिप कंपनीज हैं काफ़ी अच्छी तेज़ गति से भागते हैं तो बड़े अच्छे न्यू हाइज बनाते हैं। तो उसके बाद जो MSMEs हैं, जो छोटे मझोले शेयर हैं, जो मिड कैप है, उसमें भी बहुत गतिविधि आती है। तो कई बार चर्निंग होती है, लोग एक शेयर से निकल के दूसरे में जाते हैं, तो कई बार उनको एक में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो उसमें से निकल के दूसरे में जाके अपनी पोजीशन लेते हैं। तो इस तरीके से जो मार्केट डायनामिक्स हैं वो दीज आर टोटली इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस और कोई ऐसा संदेह नहीं है कि मार्केट एकदम से बहुत तेज़ गति से ऊपर गया था पिछले कुछ दिनों में, तो आज मार्केट में हमें थोड़ी मंदी देखने को मिली। तो एक नॉर्मल करेक्शन इसको कहेंगे कि कोई किस लेवल पे जाके तो लोग जो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुकिंग में करेंगे। So it's a breather that you're talking about. The market has taken a breather today. So are the investors in wait and watch mode ahead of the monetary policy announcement tomorrow? In fact, better than estimated Q2 GDP growth, ease in global oil prices and drop in global bond yield will be the silver lining for the MPC. Yes, all the fundamentals, I would say that all the parameters such as GDP numbers and the deceleration in the crude oil prices and other inflation numbers, all these macroeconomic numbers are favoring the market sentiment and they are supporting the sentiment at this juncture to move forward. And the RBI policy, I would say that they have maintained the status quo since the last two reviews. And in this also we are expecting that they will continue the status quo, and because now there is no reason to increase the repo rate because inflation trajectory is coming down. Now inflation is at around 4.8%, so that is significantly low from the recent high. Recent high was 7.4% in the month of July. Now again inflation has decelerated to the level of 4.8%, and going forward we are expecting that in the next few months inflation trajectory will be at around 4.2 or 4.3%. And globally also inflation is decelerating significantly. In advanced economies in US also inflation has decelerated significantly. Now they have also adopted the status quo pause situation in the Fed rate hike since the last two reviews. So going forward the situation internationally
and nationally is very, very positive. And in the macroeconomic fundamentals, like economy are stabilizing in the advanced world, and they are observing their GDP numbers, and they have taken a pause in the rising interest rates, which is favorable for the emerging and developing economies, and particularly for India, because India is the fastest growing economy, and investors incline towards India's economy when there is benign macroeconomic conditions. We'll continue our discussion with Dr. S.P. Sharma. We'll be taking a short commercial break at this point of time. मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We are in conversation with Dr. S.P. Sharma. Dr. Sharma, will RBI take a cautious approach in the three circumstances that I'm going to be talking to you about? One, there is an expectation of rise in domestic November inflation. Two, there is a drop in rabi cultivation. And three, there is an increase in food grain prices. In such a scenario, will RBI be cautious in its approach? Yes, RBI is always cautious since the inflation rise, as inflation saw a significant high trajectory. RBI is always taking the cautious approach because to balance the macroeconomic system in the country. But right now, though RBI will remain cautious, but there is no room to increase the interest rate at this juncture, because now the conditions, the global conditions and the domestic conditions are very much favorable to take a pause and to wait and watch the developments going forward. As inflation is expected to, though there may be some fluctuation month on month, but in the medium term, in the next 4 or 5 months, inflation trajectory is expected to fall significantly at around 4%. That is the expectation from many experts, that because of the high base effect or the improved supply chains and the significant deceleration in the global commodity prices, like the WPI inflation is significantly decelerated from the high level of 16-17% to the level of many months in the negative trajectory. डॉक्टर शर्मा, यदि हम आज के कारोबार पर ध्यान दें तो कुछ सेक्टर हैं जहां बहुत उल्लेखनीय प्रगति हम देख रहे हैं, अच्छी खासी तेजी, यानी यूटिलिटी सेक्टर में हम 3% से अधिक की बढ़त देख रहे हैं। पावर सेक्टर भी 2.67% से ऊपर गया है। यानी कुल मिलाकर ऐसा दिख रहा है कि बाजार की धारणा अभी भी लिवाली की ही है, छोटी और मझोली कंपनियों का भी प्रदर्शन कह रहा। तो आज की इस तेजी, यानी यूटिलिटी सेक्टर की तेजी के पीछे कोई खास कारण नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो ओवरऑल इंडिया का जो ग्रोथ है, दैट इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, एंड एवरी सेक्टर इज़ प्रॉमिसिंग। कई बार क्या होता है कि किसी सेक्टर में बहुत तेज़ गति से चाल आती है, कई बार फिर उसमें से थोड़ा थम के दूसरे सेक्टर में तेजी बनती है। तो मार्केट्स में ये सब चलता है, ये बाजार के डायनामिक्स हैं। यस, एक चर्निंग होती है। कई बार इन्वेस्टर जो है एक सेक्टर में देखता है कि बहुत ज़्यादा इसमें हमने मुनाफा देख लिया, या जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास हम पहुंच गए हैं या उससे ऊपर चले गए हैं, तो हमें और दूसरे सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। देन दे शिफ्ट फ्रॉम वन सेक्टर टू दी अनदर सेक्टर, बट द ओवरऑल ट्रैजेक्टरी, द ओवरऑल सिनेरियो इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। जैसे आपने बताया कि सभी में, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में बहुत तेज़ी देखते हैं, हम आईटी स्टॉक्स में बहुत तेज़ी देखते हैं। ये आप अगर 15-20 डेज का आप ट्रैजेक्टरी लेके चलेंगे तो आपको हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ हर एक दिन, 1-2 दिन में तेज़ी मिल जाएगी। जैसे आज कोई सेक्टर बहुत तेज़ गति से चला है, 4 दिन के बाद कोई और सेक्टर तेज़ी से चला, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी फेवरेबल फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हर एक सेक्टर ही अपनी तेज़ गति में, अगर आप जीडीपी नंबर्स के ऊपर जाएंगे, देन यू कैन ऑब्जर्व दैट अलग अलग पैरामीटर्स, जो कंस्ट्रक्शन भी अपना बहुत अच्छे से ग्रो किया है, माइनिंग सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो किया है, और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत अच्छे से ग्रो किया है, और सर्विसेज तो अपना सदाबहार सेक्टर है जो कि अच्छे से ग्रो करता है। तो ये जो 2-3 सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और ये कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, एंड विद इन दिस सेक्टर्स जो भी कंपनीज हैं,
तो उनमें बहुत तेज हम ग्रोथ हम देखते हैं. So you a while back said that the numbers today, 132 points that we lost, is not very significant. In this scenario, if this is not very significant, what is, according to you, the role the FIIs will play in the coming days? Will they stick on? Will they sell? What is your take on their performance? Because India is a long-term growth story, and this number, this Nifty 20,000, 21,000, or Sensex 64, 65, or 70,000 is not, I think, explaining the full India's growth story, because we have to go a long way. These are the numbers which will increasing every month and every year in the coming times, because we have a great growth trajectory going forward, and we are going to become a 5 trillion, 10 trillion, and even 20 trillion, 30 trillion economy in the next 25 years. So this is the start of the growth story. I would say that I think they don't have any other option, because India is the growth leader among not only in the some countries, but majorly in all the major economies. दुनिया भर में इंडिया का जो रुतबा है अभी, इंडिया ग्रोथ लीडर, चाहे वो जीडीपी नंबर्स हों या फिर एक्सपोर्ट्स हों. वी आर ऑल्सो नंबर 1 इन द एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी. वी आर मोस्ट रिजिलियंट एक्सपोर्टर अमंग द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स. उसमें भी हमारा अगर ग्रोथ IMF के आप आंकड़ों में जाएंगे या पिछले 2 साल में चले जाइए 2021-22 में, तो हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है ऑन एन एवरेज वो लगभग 14-15% रही है एवरेज, जो किसी भी देश की खास करके जो अपने आप को टॉप एक्सपोर्टर्स कहलाते हैं, जो टॉप 20 एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे हमारी ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा रही है. और जो आने वाले आंकड़े हैं, जो IMF के जो आगे प्रोजेक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग भी इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्टर्स इन द अमंग द टॉप 20 एक्सपोर्टर्स. Adding credence to what you just said, Dr. Sharma, is Finance Minister Sitharaman has also said that economic activity in the country has been good across sectors and all segments are growing significantly. Replying to a short duration discussion on the economic situation in the country in the Rajya Sabha today, Ms. Sitharaman said India is the second most sought after manufacturing destination in the world. She also listed India's achievements across industries during her response at the discussion, which started on Tuesday. The finance minister said direct tax collection grew 21.82% this year and monthly goods and services tax collections stabilized at 1.6 lakh crore rupees, a sign of economic growth. She said July to September GDP was high and India continuously maintained momentum of being the fastest growing major economy. Ms. Sitharaman informed that the manufacturing sector contributes significantly to the economy on the back of various measures like the PLI scheme. So this is what you are saying, and this is what the FM is also saying, that India is a story to be talked about. Yes, yeah. आगे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज लोकसभा में बताया कि 2020 में स्थापना के बाद से उद्यम पोर्टल पर लगभग 3 करोड़ 15 लाख उद्यमों ने अपना पंजीकरण कराया है. एक लिखित उत्तर में श्री वर्मा ने कहा कि ये उद्यम देश में लगभग 15 करोड़ 48 लाख रोजगार प्रदान करते हैं. इनमें से 3 करोड़ 52 लाख से अधिक महिलाएं हैं. यहाँ पर हम आपकी टिप्पणी समझना चाहेंगे उद्यम पोर्टल पर, और इसके माध्यम से जो छोटे उद्यमी हैं और जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं उनको किस रूप में सहायता मिल रही है और कैसे इनकी संख्या लगातार हम इस बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं. देखिए, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो उद्यम पोर्टल पे सरकार ने शुरू किया है 2020 से, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ लोगों को मिल रहा है. पहले आपको बहुत ज़्यादा लिखा पड़ी और बहुत ज़्यादा पेपर आगे फिजिकल फॉर्म में सबमिट करना, फिर उनको रजिस्टर करवा के फिर उसके ऊपर आगे फॉलोअप करना, फिर और पेपर्स की ज़रूरत पड़ गई तो फिर आपको वहाँ पे चक्कर लगाना, तो ये सब झंझट रहता था. अभी क्या है कि आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, आप अपना कुछ धंधा चालू करना चाहते हैं तो आपको बहुत समय नहीं लगेगा. आप एक ही दिन में सीधा जाके उसके ऊपर अपने जो अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिजायर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि आपका पहचान पत्र, आपका पैन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
तो आप अपने आप को बहुत ही जल्द रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कुछ झंझट, वहीं पे जो ह्यूमन इंटरफेस है वो है ही नहीं, आपको किसी को जाके मिलना भी नहीं है. यू विल बी ऑटोमेटिकली गेटिंग योर रजिस्टर्ड नंबर एंड यू विल स्टार्ट योर बिजनेस इमीडिएटली. तो वो झंझट हट गया है, जो कि कागज लेके जाना और फाइल तैयार करके फिर आगे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में घूमना, और फिर उसके बाद भी फिर आगे वेट करते रहना कि पता नहीं कब मेरे को जो रजिस्ट्रेशन की चिट्ठी आएगी और उसके बाद फिर मैं अपना कुछ कारोबार शुरू कर पाऊंगा. तो ओवरऑल जैसे अभी सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो कंप्लाइंसेस, खास करके जो 40,000 ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो सरकार ने रिमूव कर दिए हैं, जो पहले बहुत जरूरी हर्डल्स क्रिएट करते हैं. जी. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ. मिलिए एक और दान बहादुर से. इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है. प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की. मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा. आप छोड़ो ना. और आप हाथ धो लो पैसों से. गारंटीड रिटर्न्स धोखा है. स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने. हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. Welcome back to Market Mantra. The government has said that for the first time, goods merchandise sector has surpassed the services sector in exports. Addressing a press conference in New Delhi, Electronic and IT Minister Ashwini Vaishnaw said this has been possible due to the Make in India initiative of Prime Minister Narendra Modi. The minister said the export has reached $762 billion in the last financial year. The goods merchandise export has gone up to $453 billion, while services export was at $309 billion. Further, he said, India will soon reach $1 trillion exports. The exports of mobile phones have reached the fourth position in overall exports due to Make in India. The country has exported mobile phones worth more than $11 billion in the last fiscal. Prime Minister Narendra Modi had launched Make in India initiatives to promote manufacturing sector in the country. The minister said India will soon reach the top two positions in the exports of mobile phones. यहाँ पर फिर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. निर्यात के मोर्चे पर जो ये ताज़ा प्रगति हुई है उसके संबंध में क्या विचार देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये माननीय मंत्री जी ने बहुत सही फरमाया है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकॉनमी बनेंगे. मेरे ख्याल से जो अनुमान है 2025-26 तक हम एक ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट है इंक्लूडिंग द मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज मिला के हम कर पाएंगे उस टाइम पर. और जो हमारा आगे जो प्रोजेक्शंस हैं, जो आगे हमारा टारगेट है वो 2030 तक हमारा $2 ट्रिलियन का टारगेट है, जिसमें से $1 ट्रिलियन जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रहेगा, $1 ट्रिलियन सर्विसेज एक्सपोर्ट रहेगा. तो एक्सपोर्ट्स ने काफ़ी तेज गति पकड़ी है पिछे 2-3 साल से, खास करके जब कोरोना का जो एक संकट आया उसके बाद जो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई थी, तो इंडिया इज़ नाउ वेरी मच कनेक्टेड विद द ग्लोबल सप्लाई चेन्स. बहुत ही अच्छे से इंडिया ने अपनी पोजीशन ले ली है और आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छी आशाएं हैं कि हम काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे. Okay, we've also talked about the $309 billion services and the goods which were $453 billion worth of exports that has happened. And a lot of credit of that goes to Make in India. Yes, definitely, because since the start of this Make in India campaign, there is great momentum in the export trajectory and manufacturing sector with the support of ease of doing business. And I would like to mention that exports were less than $300 billion in the last, I believe, 2017-18. But now, after the corona virus, the global supply chains are now very much in sync with India's efforts to promote exports more and more in the global trade arena. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां लगभग सभी प्रमुख बाजारों में आज बिकवाली देखी गई. निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.8% लुढ़क गया.
दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की नरमी देखने को मिली। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.1% नुकसान के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हेंग सेंग 0.7% नीचे आकर बंद हुआ। उधर सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स भी बिकवाली के दबाव में 0.42% नुकसान में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली ही दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.2% नीचे कारोबार कर रहे थे। लंदन का फुट्सी 100 भी 0.1% नुकसान के साथ चल रहा था। Wall Street ended low yesterday. The Nasdaq Composite Index declined 0.5%. The S&P 500 fell 0.4%, and the Dow Jones Industrial Average slipped 0.2%. What are your expectations, Dr. Sharma, on how the markets will behave, keeping in mind how the U.S. markets are going to be reacting in the coming weeks, especially to do with rates? Yes, I think markets will stabilize at this juncture at the higher level, because now US is also taking pause, and India is already in the support of the economy, and there is again pause, and pause is expected tomorrow also. So going forward, I think there will be liquidity situation in the market, and markets will remain intact in the coming times. Particularly for India, we have a great future, great bright spot, and because our fundamentals are strong, and our economic systems and business lines are also becoming more and more prominent with the global value chains. So going forward, we have great expectations from the economy and markets. Okay. Oil prices today reclaimed some ground after tumbling to a 6-month low the previous day, but investors remain concerned about slow demand in the United States and China. In intraday trade, Brent crude was trading at $74.95 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was trading at $69.93 per barrel when reports last came in. What are your expectations from oil and the prices? Yes, oil is impacted keeping because the demand of US and China. Yes, because demand is slowing in those economies, the largest economy and the second largest economy. So that's why crude is in pressure. So I think prices of crude will remain impacted, because the global growth for the next year is also not that much high, and growth has decelerated from 3.5% to 3%, and then again 2.9% for the next year. So I think there is not a great bullish mood for the crude oil prices. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 70 रुपए बढ़त के साथ 62,640 पर चल रहा प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 130 रुपए घटकर 74,700 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us, Dr. Sharma. And before we close, the headlines once again. Key domestic indices in negative. Sensex closes at 69,522. Nifty settles at 20,901. Registration of around 3.15 crore enterprises since the inception of Udayam portal, says Minister for MSME. Merchandise sector surpasses services sector in exports, says Union Minister Ashwini Vaishnaw. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
ब्रेवरी मेडल मिला है। ही इज अ मेजर इन आर्मी, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। करण, तेरे पापा क्या करते हैं? रोहन, तेरे डैडी। करण, बताना। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। कभी सोचा है हमें अचानक कुछ हो गया तो करण के पापा हमारी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सही एडवाइस देते हैं। हमें अपने लाखों LIC एजेंट्स पर गर्व है जो हर एक का जीवन सुरक्षित बनाते हैं। LIC में हम आपका स्वागत करते हैं।